हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एयर के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्लास 7 की वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. Clear? All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays. Without this blanket of protection, we would be baked alive due to the heat of the sun during day and get frozen during night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. Clear? Now let's discuss question answers based on this passage. First question is, blanket of air is called, options are atmosphere, greenhouse or global warming. Answer is atmosphere. Blanket of air is called atmosphere. This is the definition of atmosphere also. Next question is, without this blanket, living beings, options are could not live on the earth or could not get livable temperature on the earth, or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Next question is, greenhouse gases, options are carbon dioxide or oxygen or ozone. Answer is carbon dioxide. Carbon dioxide is greenhouse gas because it traps the heat come on the earth from sun rays and did not allow it to go back from the atmosphere to maintain the temperature of on earth. Next question is, most plentiful gas in the air is, options are oxygen or nitrogen or ozone. Answer is nitrogen. Nitrogen is the most plentiful gas in the atmosphere. Next question is, ozone layer is found in, options are troposphere or stratosphere or mesosphere. Answer is stratosphere. Ozone layer is found in stratosphere, which protect us from the harmful rays of sun. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।